Okay, we've been given two straight lines and we have to see whether they are intersecting, perpendicular, parallel or they are coinciding. हमने सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है y इक्वल mx प्लस b फॉर्म में. फर्स्ट लाइन विल बी y इक्वल टू माइनस 7x ओवर 2 माइनस 3/2 एंड द सेकेंड लाइन विल बी y इक्वल 21x ओवर 6 माइनस 21x ओवर 6 माइनस 9 ओवर 6. हम 3 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 7 ओवर 2 एंड 3 ओवर 2. नाउ दिस मीन्स कि हमारे पास m इज माइनस 7/2 एंड जो y intercept is c which is minus 3/2. Both of these equations have the same m and the same c, therefore these lines are coinciding. Okay, now we just have to see which equation जो है represents a horizontal line. x equals c, y equals c, x equal minus y या x equal y. So हम left से start करते हैं. I know कि x equals c में का मतलब है कि x is a constant and it will be a constant throughout the graph. So that is a vertical line. And then we have y equal c. We know that y has to be a constant throughout the graph. Therefore, it is in fact a horizontal line. तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं. But we will see कि option C या D में कोई ऐसा option नहीं है both A and B या both B and C इस तरह का कोई option नहीं है, तो option B is the correct answer and we'll move on.